Hello everyone, how are you all doing? Happy International Women's Day to all. You must have heard a dialogue, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है. It's true in every sense, because Chanakya once said, women are the real architects of society. That is, महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं. Even the theme of 2021, Choose to Challenge, states that women are responsible for their own thoughts and action, and they challenge the world every day. Also, it signifies that women choose to challenge gender bias and inequality in the world. Indeed, her feminism is his too. You might be wondering why I'm saying that. It is so because you might have heard a common expression to raise daughters like son. But how often do you hear parents proudly stating that they would like to raise daughter and son equally by equal parenting, providing equal opportunities, equal rights? Distorted notions of weakness not just hurting our women but our men as well. So after this, in general, एक वो औरत जो सक्सेसफुल है and had faced struggle socially, economically and also from the family. एक वो औरत जो सक्सेस के लिए स्ट्राइव कर रही हैं एंड इसी जर्नी में एक वो हैं जो गिव अप कर देती हैं और आइदर फोर्स टू गिव अप. एक वो औरत भी हैं जिनको सांस से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाता है. They don't even know what a woman can do except household work because their upbringing had kept them in the situation where they don't know about the external world. All these categories or situations arises because of gender inequality, which has given rise to a very bold text that is male dominance. जी हाँ, हम ही वो हैं जिन्होंने खुद को ये टैग दिया है कि हम मेल डोमिनेंट हैं, क्योंकि हमने कभी औरतों के एग्जिस्टेंस, उनकी वैल्यू, उनके अधिकार और उनके पोटेंशियल को समझा ही नहीं. एज द टाइम इज चेंजिंग, वी नीड टू चेंज द आइडिया ऑफ द टर्म मेल डोमिनेंट. हमें इस वक्त जरूरत है कि हम इस मेल डोमिनेंट या पुरुष प्रधानता के असली मतलब को बेहतर तरीके से समझें और इस डोमिनेंट शब्द को अपडेट और अपग्रेड करें. डोमिनेंट का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को दबा के ऊंचा उठें, बल्कि ये है कि हम सबकी मदद करें टू राइज एंड शाइन. तो इस हिसाब से एनीबॉडी कैन डोमिनेंट. इट्स अबाउट पर्सन, क्योंकि पुरुष प्रधानता में हमने इस डोमिनेंट या प्रधानता को अलग नजरिए से देखा है. सो एज द सोसाइटी सेज मेल इज डोमिनेंट, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वुमेन्स को अपलिफ्ट, दैट इज राइज एंड शाइन करने में पूरी कोशिश लगा दें, बी इट एवरी लेवल, socially, economically and mentally. That's what dominant means in the real existential upgraded or updated world. Now, considering all the male feminists across the globe और जिनके निरंतर प्रयास से समाज के मिथ्स टूटे और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार मिले, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं. उनमें से कुछ उदाहरण हैं. अरुणाचलम मुरुगनाथम, also famously known as Padman of India, dare to speak openly about a woman taboo, even building a fake uterus to test the quality of sanitary pads. Strong man not making country strong. और बिल्डिंग से हाई जंप न मारे, नीचे से डायलॉग न मारे, हाई स्पीड में. Woman strong, mother strong, sister strong, then country strong. Raja Ram Mohan Roy, who credited the Brahmo Samaj that sought to break the shackles of the caste system and the fight against sati that saved the lives of many women. Dr. Bhimrao Ambedkar, he ensured that the universal adult franchise was an integral part of the republic, enabling voting rights for women and other minority groups. He was one of the first activists to root for the working rights of the women, where he argued that it is in the interest of the nation that the mother ought to get a certain amount of rest during the prenatal period. Also, Dr. Bhimrao Ambedkar highly emphasized on basic fundamental rights of women. Justin Trudeau, the Canadian Prime Minister, established his feminist bona fide as soon as he was elected by ensuring that 50% of his cabinet were women. His 2018 budget proposal included measures for equal pay, parental leave, more funds to girls' education and women's economic empowerment. Similarly, fifth person can be you, me or any among us. Yes, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं जो महिलाओं के लिए कैटलिस्ट बन सके. और अगर आप उनको ऊंचा उठने में मदद नहीं कर सकते तो उनको नीचे भी ना रखेंगे, क्योंकि
ये ही असली डोमिनेंस 2.0 है और इस असली डोमिनेंस 2.0 को समझाने से एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।